नमस्कार, मैं करिश्मा मानी आप सभी दर्शकों का इनक्रेडिबल न्यूज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रथम तो गांधीधामना स्थापना दिन निमित्ते तमाम गांधीधाम वासीओने खूब हृदयपूर्वकनी खूब खूब शुभकामनाओं आपું છું। हमेशा કહેવાય છે અને કહ્યું છે કે વિભાજનની વેદનામાંથી સપાયેલું આ નગર છે। अनेक प्रकारनी मुश्केलियों ने काळनी थपाटोने झीलीने केटला केटला खाटा मीठा संस्मरणों पोतानामां साचवीने बेठेलुं आ नगर आजे जिल्लानो आर्थिक राजधानी होवानी साथे साथे राज्यना मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब अने देशना प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहेबनी विशेष लागीने कारणे राज्यना केटला गळ्या गांठ्या शहेरोने महानगरपालिकानो दरज्जो प्राप्त थयो एमां गांधीधामने पण महानगरपालिकानो दरज्जो आपीने गांधीधामनी जनता अने समग्र कच्छनी जनता माटे एक खूब मोटुं नજરાણું आदरणीय मोदी साहेब अने आदरणीय भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबे आप्युं छे। एटला माटे गांधीधामनी अने कच्छनी जनता वतीथी ए बने महानुभावों हृदयपूर्वक आभार मानु छूं। गांधीधाम वासीओने आजना दिने हृदयपूर्वकनी शुभेच्छाओं पण आपूं छूं, अभिनंदन पण आपूं छूं। जे सपना साथे भाई प्रतापे आ नगरनी स्थापना करी थी अने जे रीते काळजी लईने आ नगरने विकसाववा माटेनी नेम व्यक्त करी थी, लागे छे के आजे नगर ए दिशामां जई रह्युं छे अने आजे भाई प्रतापनो आत्मा ज्यां हशे त्यां खूब खुश हशे के एनी सपनानुं गांधीधाम आजे आकार लई रह्युं छे। एटले चोक्कसपणे एम कही शकाय के गांधीधामना लोकोने माटे गांधीधामनो स्थापना दिन आजे खूब आनंदनो अवसर छे, गौरवनो प्रसंग छे अने खूब खूब अभिनंदनीय बाबत छे। फरी फरीने आजना दिने गांधीधामनी भविष्यनी प्रगति माटे, एकता माटे, भाईचारा माटे, राष्ट्र प्रत्येनी भावना माटे अने राष्ट्रवादना विचारोने मूर्तिमंत करवानी दिशाना प्रयत्नों माटे गांधीधामने अने जनताने हृदयपूर्वकनी शुभकामनाओं आपું છું। खूब जुदा जुदा लगभग 30 करोड़ना प्रकल्पोनुं पण आजे खातमुहूर्त अने लोकार्पण करवामां आव्युं छे। गांधीधामने महानगरपालिकानो दरज्जो प्राप्त थया पछी थोड़ा दिवसों पहला राज्यना आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबे पण गांधीधाम आवीने लगभग 200 करोड़ना कामोनुं खातमुहूर्त अने लोकार्पण कर्युं हतुं। आजे पण गांधीधामना स्थापना दिन निमित्ते लगभग 30 करोड़ जेटला विविध विकास कामोनुं खातमुहूर्त अने लोकार्पण करवामां आव्युं छे। खूब झड़पथी गांधीधामने अपाती सगवडोमां अने गांधीधामना विकासमां जे रीते खूब झड़पथी सुधारो थई रह्यो छे, समग्र गांधीधामनी जनता खूब आनंद साथे, उत्साह साथे, सहकारनी भावना साथे अने सरकारने अभिनंदननी साथे तमामे तमाम कार्यमां खूब सरस सहयोग आपी रही छे। अधिकारी अने कर्मचारी मित्रों द्वारा पण खूब सरस रीते निष्ठापूर्वक काम करवामां आवी रह्युं छे। सर, एक बात निकली छे આજે मेडिकल कॉलेज लावવાની, એવી રીતે ડિગ્રી જે હાયર ડિગ્રી એડ્યુકેશન માટે પણ કોલેજનો અભાવ છે કચ્છ જિલ્લામાં, એ માટે શું પ્રયાસ થશે? ચોક્કસપણે કચ્છમાં નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની લાગણીથી જ કચ્છને એક સ્વતંત્ર યુનિવર્સિટી મળી છે। એ યુનિવર્સિટીમાં આજની તારીખે 50 જેટલી કોલેજો છે। એક સમય કચ્છમાં માત્ર 5 થી 6 કોલેજો હતી। આવતા દિવસોમાં પણ તમે જોયું હશે કે ગત દિવસોમાં કચ્છને એક વેટરનરી કોલેજ પણ મળી છે જે ભુજમાં કાર્યરત છે। આવતા દિવસોમાં એગ્રીકલ્ચર કોલેજ પણ આવતા દિવસોમાં શરૂ થવાની છે। अन्य जे कई शिक्षण माटे जे कई सुविधाओं छे ने खास करीने कच्छना जे रीते बंदरनीय प्रवृत्तिओ छे ए प्रवृत्तिओ आधारित पण कोर्सिस शरू करीने कच्छना युवानोने ए अभ्यासक्रमनी लाभनी साथे साथे रोजगारीनी पण तकोनुं निर्माण थाय एवा प्रकारनी ચોક્કસપણે રાજ્ય સરકારની નેમ છે। સાહેબ, આજે ગાંધીધામ દિવસના નિમિત્તે ઘણા બધા શાળાઓમાં અથવા કોલેજોમાં
રજા ન હતી અને આપણે ગાંધીધામના વાસીઓએ અને એમાંય રજા ન મળે એ માટે તમારું શું તો કહેવું? ગાંધીધામને સ્થાનિક રીતે કોઈ પણ સંસ્થાઓ એને વર્ષમાં જે રીતે નિયત થતી હોય સ્થાનિક રજાઓ જે તે સંસ્થાઓ રાખી શકે છે. કદાચ બની શકે છે કે કેટલીક સંસ્થાઓએ સ્થાનિક રજાનો ઉપયોગ કર્યો હશે અને કેટલીક સંસ્થાઓ કદાચ શરત ચૂકથી રજાનો ઉપયોગ નહીં કરતી હોય તો કમસે કમ ગાંધીધામ કોમ્પ્લેક્સના લોકો માટે, બાળકો માટે, વિદ્યાર્થીઓ માટે એ જો સ્થાનિક રીતે જો વ્યવસ્થા કરે તો એ વધારે સારું ગણાશે.